Hello, law aspirants. I welcome each and every one of you to CLAT Possible, your one stop solution to crack the common law admission test and all other important law entrance exams. Friends, my name is Nikhil Katyal. I am an alumnus of National Law University, Jodhpur, and I am your academic mentor at CLAT Possible. Friends, let's discuss some of the important current affairs. It is Saturday today. I hope that all of you are enjoying your weekend. It's 27th November, and let's try to make your weekend even more productive with this class. So, friends, first things first, thank you so much for such an overwhelming response and support that you have given to all the videos. The previous live streaming, I remember asking you all about a haunted beach. I was telling you about a very clean city of India, that is Surat. And friends, the name of the beach is Dumas Beach. Next, friends, I also asked you to comment on the video. Some of you commented, some of you didn't. So it's a request to all of you. Please make sure that you do comment on these videos. Also, friends, एक rule है golden, जो कि शायद हो सकता है बहुत टाइम से मैंने रिट्रेट नहीं किया है, तो मेरे कुछ दोस्त इसे भूल गए हैं या हल्के में ले रहे हैं. That rule is, friends, whenever you comment or whenever in front of your notebook you have an opportunity to write your name, do write down All India Rank 1 and your name in front of it. Trust me, friends, the secret of attraction is super powerful. Let's send a positive affirmation to the universe so that the circumstances and the situations and the universe itself manifests in such a way that हम All India Rank 1 हासिल कर सकें बहुत जल्द. Also, I hope that all of you are super motivated while preparing for CLAT. Another thing that is happening nowadays, plus 2 class is going through the board examination phase. Now, my best wishes are there for each and every student writing the board's exams. One thing that you need to remember is that, friends, health is wealth. Do take good care of your health. Do not take anxiety. Do not take overburden. Do not overburden yourself. Do not take too much stress. These board examinations, they are not difficult. Just remember that all you need to do is utilize your energy and your time towards preparing for them rather than worrying about them. Also, if possible, I highly recommend all of you to maintain a touch with the CLAT preparation. These videos that I upload and make for all of you, they are a very good way to break away from the monotony of the school board exam preparation. So do make sure that you do watch or do spare 50-60 minutes every single day for CLAT preparation, even when your boards are there, right? So my best wishes are there, and let's begin the class today. Now, very important thing that I need to discuss with all of you is, friends, the NFHS. Also, some of you might be wondering कि यार निखिल सर कहाँ गायब हो गए. तो friends, I am not in my hometown. As a result, I do not have the setup for the video also to be integrated into this video. बट मेरे को लगा कि सेटअप का वेट करता रहूंगा तो वीडियो डिले ना हो जाए, इसलिए आप लोगों के लिए आज अपलोड कर रहा हूं वीडियो. आई एम एट द क्लैट पॉसिबल देहरादून सेंटर. And friends, I have had 2 amazing sessions already with the students over here. Tomorrow is Sunday. In case you are watching this video from Dehradun, make sure that you do visit the center and do attend 4 hours of class with me at the Dehradun center. Right? आइए, NFHS होता क्या है इसके बारे में आपको थोड़े से की पॉइंट्स बता दूं. लेट्स डाइसेक्ट दिस टॉपिक. N stands for national, F is for family, friends, H is for health, and S is for survey. Now this survey is very important. Why it is important? Because, friends, it tells about certain important emerging trends related to, friends, the family health. These trends are fertility. So many different things are discussed in this survey. Today, friends, I will be telling you a very good news of sorts, you can say, and that is related to the fertility rate. But to understand that, the first thing that you need to understand is what is, friends, total fertility rate. TFR in short, total fertility rate. Now, friends, total fertility rate is the average number of children per woman
In other words, I can say that TFR is nothing but the number of children that are either born or are likely to be born to a woman in a lifetime. I repeat, total fertility rate indicates on an average how many children will be born or are likely to be born to a woman in her lifetime. Now, friends, the total fertility rate, if it is equal to 2.1, if the TFR is equal to 2.1, then this is known as, friends, replacement level fertility. Please note it down. रिप्लेस क्या हो रहा है फ्रेंड्स? जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर उसी को ही स्टेबल बनाए रखना है, उतना ही रिप्लेस करते जाना है, तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव करनी होती है किसी भी कंट्री को. मीनिंग देयर बाय द टीएफआर शुड बी 2.1 इफ यू वांट टू एंश्योर जितनी पॉपुलेशन है आगे भी एग्जैक्टली उतनी ही चलती रहे. Anything more than 2.1 means that there is going to be a growth in the population, and friends, anything below TFR 2.1 indicates that the generation nowadays isn't producing enough children to replace itself. I repeat, हिंदी में समझाता हूं आपको. टोटल फर्टिलिटी रेट यदि 2.1 हो तो इसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं. अगर ये 2.1 से कम है, इसका ये मतलब है कि इतनी रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है बाय द प्रेजेंट जनरेशन जिससे कि उतने बच्चे पैदा हो सके ताकि कि अभी वाली जनरेशन अपने आप को रिप्लेस कर सके फ्यूचर के अंदर. नाउ लेट मी शेयर अ फन फैक्ट विद यू. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस, बट सो दैट यू हैव एन आइडिया कि 2.1 से कितनी ज्यादा होती थी टीएफआर हमारे कंट्री के अंदर. लेट मी टेक यू टू द 1950s. In 1950s, friends, the total fertility rate in India used to be 6 and even more. Meaning thereby कि average 6 बच्चे या उससे भी ज्यादा बच्चे हर औरत पैदा करती थी या likely थी पैदा करने के लिए in her lifetime. This was the trend in 1950. No wonder हम इतनी ज्यादा population होगी इंडिया के अंदर that today, friends, we are the second most populated country in the world after China. And it has been projected that very soon, somewhere around you can say 2028, we will be taking over China as the most populated nation of the country of the world. But friends, the good thing that has emerged in today's time by the National Family Health Survey is that, friends, the total fertility rate of India has seen a decline. This can be seen as a big time relief for the Indian population. इससे ये मतलब है कि फ्रेंड्स हमारा जो टीएफआर है पहले के मुकाबले कम हुआ है. बट पहले होता कितना था ये समझते हैं. पहले फ्रेंड्स मैं आपको 2015 और 16 का एक ट्रेंड बताता हूं. द टीएफआर इन द कंट्री यूज्ड टू बी 2.2. But friends, the latest data that has been released under National Family Health Survey is for the year 2019 to 2021. Yes, इसे ध्यान से नोट कर लो. 19 से लेकर 21 तक का डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने रिलीज किया है. एंड दे आर सेइंग दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड टू 2. ठीक है, ड्रॉप हो गया है फ्रॉम 2.2 टू 2. ऑल्सो फ्रेंड्स, अर्बन के अंदर ये और भी कम है. अर्बन एरियाज के अंदर जो टीएफआर है दैट इज जस्ट 1.6, whereas in rural areas the TFR is 2.1. मीनिंग thereby कि रूरल एरियाज में तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, जनरेशन इतने बच्चे पैदा कर रही है कि वो अपने आप को रिप्लेस कर देगी. बट अर्बन एरियाज के अंदर काफी कम है टीएफआर, मीनिंग कि जो जनरेशन है वो काफी बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो अपने आप को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी जनरेशन. जितने हम लोग आज के दिन के अंदर हैं, अगर हम कम पैदा करेंगे बच्चे इन द फ्यूचर, तो जितने लोग अभी हैं स्टेबलाइज हो जाएगी पॉपुलेशन, धीरे धीरे कम होते जाएगी पॉपुलेशन. राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू अबाउट टीएफआर. नाउ ये कम कैसे हुआ है फ्रेंड्स? 2.2 से 2 जो हुआ है ओवर दीज ईयर्स, इट इज ड्यू टू सस्टेन्ड फैमिली प्रोग्राम efforts by the government. Now just try to understand what are the basic reasons for decline in TFR.
It's a great thing that women nowadays are being empowered. In fact, friends, NLU की एक खास बात बताता हूं आपको. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर व्हेन आई वाज स्टडिंग रफली 90 स्टूडेंट्स वर देयर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन माय बैच, ओनली 90 स्टूडेंट्स. एंड फ्रेंड्स, द जेंडर रेशियो was such that more than 50%, roughly around 55 to 60% of my batch was girls. Now this is something very very encouraging from the gender ratio perspective, meaning thereby that the people are liberated enough that today they are encouraging their daughters to go and study in prestigious institutions like NLUs. ठीक है. तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आज भी आई नो जो फेयर सेक्स है, दैट इज द विमेन, इनको बहुत ज्यादा जगहों पर इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट की जाती है. ऑल्सो फ्रेंड्स, they are at a disadvantage due to the patriarchal societal setup that we have in India since many many years. But the good thing is that the change cannot come overnight, right? And धीरे धीरे करके ही change आएगा. The good thing is that small little positive outcomes of this change can be seen in the form of more and more women getting empowered. Now women अगर empowered हो रही हैं तो friends, उनकी शादी बहुत जल्दी नहीं की जा रही. Age at marriage in on an average of girls is increasing. Along with it, friends, another main reason why the population or the total fertility rate has come down is that, friends, people are more and more aware nowadays, and there is an increased trend of using contraceptives. If contraceptives are used, then friends, obviously the total population, total fertility rate, it comes down. Now, a very important factor why TFR has come down is because of, friends, sustained government efforts. I said कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लोगों को बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाया जाए कि भाई सोच समझ के ही फैमिली प्लान करो, अपने एक्सपेंसेस देखो, अपना बजट देखो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देखो, एंड प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली go on reproducing more and more children जिनका आप ख्याल ही नहीं रख पाओगे, and who will be born at the cost of the women's health. In fact, friends, Prime Minister, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in 2019, इन्होंने Independence Day speech दी. And friends, I quote him, he said that population control is also a form of patriotism. So he encouraged the country, people, the citizens to control the population, and he said that even if you do this, then this is a unique way of showing your own patriotism. Along with it, a mission is very very important that I must tell you all about. It is, friends, mission परिवार विकास. अब परिवार का विकास कब होएगा? जब, फ्रेंड्स, जितने रिसोर्सेज हैं उसी हिसाब से प्लानिंग की जाए, जो मदर है या जो लेडी है उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट ना की जाए बाय forcing her to bear more and more children. Obviously, you all must be sensitive enough to this thing that more and more children that a lady bears, okay, उन्हें पैदा करते हुए, she is, it takes a toll on the health of the lady, right? So मिशन परिवार विकास का सबसे बड़ा एम, एक तो ये 2017 में स्टार्ट हुई, इसका सबसे बड़ा एम था टू इंक्रीज द एक्सेस को क्या करना है, इंक्रीज करना है. बट एक्सेस टू व्हाट? फर्स्टली, फ्रेंड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंड अलोंग विद कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फैमिली प्लानिंग ऑल्सो. बट फ्रेंड्स, क्या पूरे इंडिया के अंदर ये किया गया मिशन परिवार विकास? द आंसर इज नो. सबसे ज्यादा ये वहां टारगेटेड था जहां पर, फ्रेंड्स, हाई फर्टिलिटी थी. कुछ स्टेट्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एक ट्रेंड देखा जाता है कि फर्टिलिटी रेट इज द हाईएस्ट, मीनिंग देयर बाय द पीपल आर suffering from lack of awareness and they are reproducing more and more children without giving a thought कि भाई उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, बच्चे की हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, बच्चे को न्यूट्रिशन दे भी पाएंगे हम, बच्चे को एक डिसेंट लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर भी पाएंगे हम, राइट? सो फ्रेंड्स, टोटल 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये लागू किया गया. बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाई फर्टिलिटी? High fertility means if the total fertility rate is, friends, 3 or more. 3 या उससे ज्यादा अगर total fertility rate होगा, then it is known as high fertility district.
सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा TFR नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंडर 2 तक दिखाया गया है, इट हैज शोन अ डिक्लाइन. इट शोज द सिग्निफिकेंस दैट फ्रेंड्स देयर हैज बीन अ स्टेबिलिटी दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पॉपुलेशन, एंड इन द लॉन्ग टर्म हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी. इससे होगा क्या फ्रेंड्स, यंगर पॉपुलेशन प्रोफाइल रहेगी अगले 2 से 3 डेकेड्स तक, एंड इट विल प्रोवाइड एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ. The downside that this trend has shown is that friends, female sterilization बढ़ी है. ओके ताकि और रिप्रोडक्शन ना हो सके, इसलिए आइदर मेल्स आर इनकरेज टू गो फॉर स्टेरिलाइजेशन और फीमेल्स आर इनकरेज. फ्रेंड्स 2015 और 16 के अंदर जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन थी, एफएस लिख रहा हूं शॉर्ट के अंदर, दिस यूज टू बी अराउंड 36%. बट फ्रेंड्स इन द सर्वे नाउ डेज इट इज शोन कि 38% हो गई है, मीनिंग देयर बाय दैट द बर्डन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन और टू स्टॉप द पॉपुलेशन ग्रोथ has finally come on women only, showing the lack of participation of men. So national family health survey और भी बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता है. In the next upcoming videos I'll be discussing all of them. In the meantime I have some homework for you, and I hope that all of you will be commenting on this video by writing your name towards the end. नाम एंड के अंदर लिखा करो, ऑल इंडिया रैंक 1 एंड अपना नाम, और सबसे पहले फ्रेंड्स आंसर्स लिख दिया करो टू ऑल द क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन दैट आई आस्क हियर टुडे इज फ्रेंड्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन रिलीज करता है, कौन सा ऐसा मंत्रालय है दैट रिलीजेस द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 for all of you is that who is heading or who is the union minister of this ministry. Question number 3 that I have for you, tell me an organization जो कि फ्रेंड्स पॉपुलेशन रिलेटेड काम करती है एंड इज एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशंस. डू सम रिसर्च, यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर्स. Moving to another news, friends, I told you about the course of river Ganga. The mighty Ganga starts from Gangotri. It is known as Bhagirathi. It joins Alaknanda at Devprayag. Thereafter, it is known as Ganga. It flows through Uttarakhand, then Uttar Pradesh, then Bihar, Jharkhand, briefly for a while in Jharkhand, and finally West Bengal में जाके it bifurcates into Hooghly, जो कि कोलकाता की तरफ चली जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, एंड दूसरी ब्रांच बांग्लादेश में फ्लो कर जाती है, वेयर इट इज नोन एज पद्मा एंड ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर और जमुना रिवर, एंड फाइनली दे फॉर्म मेघना रिवर एंड द सुंदरबंस डेल्टा. सो फ्रेंड्स, मैं आपको रिवर सिटीज के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं. अ न्यू अलायंस हैज बीन फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज RCA. RCA स्टैंड्स फॉर रिवर सिटीज अलायंस. अब फ्रेंड्स दो मिनिस्ट्रीज ने मिलके इस अलायंस को जन्म दिया है. वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. सो क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू ऑल टुडे इज, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति? एंड क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू इज, इन विच ईयर वॉज इट फॉर्म्ड? इट्स अ वेरी रिसेंट मिनिस्ट्री. डू लेट मी नो कौन से साल में बनाई गई. एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. Now, Ministry of Housing and Urban Affairs, you all know it is headed by Hardeep S. Puri. But I have another question for you. Tell me all the schemes which are under Ministry of Housing and Urban Affairs. Now, friends, River Cities Alliance के बारे में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, या रादर आपको बताना चाहता हूं वो ये है, that this is basically a platform to discuss sustainable management of urban rivers. Friends, कई सारे शहर हैं जो कि ऑन द बैंक्स हैं ऑफ रिवर्स, राइट? लाइक आई टोल्ड यू, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता. देयर आर सो मेनी सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. डू लेट मी नो ऐसी कौन सी सिटी है जो आपने रिसेंटली विजिट की है जो कि किसी रिवर के बैंक पे है. In fact, friends, while coming towards Dehradun from Chandigarh side, I always cross a very wide river known as Yamuna. And एक शहर है हरियाणा का, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम ही नदी पे है, यमुना नगर. Do let me know in the comment section, क्या आप किसी एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां से कोई नदी बहती है? लाइक लखनऊ के जो स्टूडेंट्स होंगे वहां गोमती बहती है, कानपुर वाले गंगा बता सकते हैं, प्रयागराज वालों के यहाँ तो 3 नदी हैं. Then another center we have at Patna. They can also tell me कि गंगा सर.
जयपुर वाले स्टूडेंट्स क्या वो भी कुछ बता सकते हैं? दिल्ली वाले स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बता सकते हैं, वेरी पॉल्यूटेड रिवर। पॉल्यूटेड नहीं है, अच्छी रिवर है, पॉल्यूट हो जाती है दिल्ली पहुंचते पहुंचते। Do let me know in the comment section below. Also, friends, let me tell you that RCA is basically a platform to discuss sustainable management of urban rivers, ताकि मैनेज की जा सके सिटीज। इतनी ज़्यादा आजकल पॉल्यूटेड हैं, इन सिटीज़ की मैनेजमेंट बहुत असेंशियल है। अब इससे सिटीज क्या करेंगी, एक प्लेटफॉर्म दिया है तो वो डिस्कस कर पाएंगी एक दूसरे के साथ और बता पाएंगी कि भाई हम फेल क्यों हुए, हमें क्या लगता है, या फिर कोई सिटी अगर बहुत अच्छे से सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर पा रही है रिवर्स की तो वो बता पाएगी व्हाई वी आर सक्सेसफुल, एंड दिस विल हेल्प अदर्स टू लर्न फ्रॉम देम। Initially, friends, River Cities Alliance, it began with Ganga Basin cities. बेसिकली गंगा नदी के आसपास जो शहर थे वो इसका पार्ट थे, बट फ्रेंड्स नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड सिटीज बियॉन्ड द बेसिन एज वेल। सो आई होप आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे along with friends river cities alliance अच्छे से समझ आया होगा। Very soon as I reach back to my hometown Chandigarh, where I have the setup, I will come up with loads and loads of more videos for you. In case you are missing the video in the my video in this video, मेरी शक्ल अगर नहीं दिख रही है तो डोंट वरी, दिस इज नॉट परमानेंट, ये सिर्फ आज के लिए है। मेरा बेसिक एक मकसद था कि वीडियो डिले ना हो और आप तक एक वीडियो पहुंच सके। ऑल्सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके लिए जो मिनिस्ट्री मैंने आपसे पूछी है, जो कि मैंने आपको कहा था कि कौन रिलीज कर रहा होता है इसे, उसने डेजिग्नेट किया है एक इंस्टीट्यूट को, IIPS को, as the nodal agency. What is IIPS? Do let me know in the comment section. Friends, this is me, Nikhil Katyal, your friend, educator, and mentor, signing off from the Dehradun. I was about to say from the city beautiful.